hi everyone, I'm Mahashweta from Printo Canvera Group of Companies, live once again from Nama Bengaluru. So thank you for joining us this evening. Today we have a very special guest with an even special topic. So as home to photographers nationwide, we have come to notice the inequitable measure of differences between male and female photographers. This session is all about setting the platform and opportunity for women photographers who wish to pursue a career in photography. And who better to set that notion than a successful female photographer? So, today Canvera is delighted to join hands with Priyadarshini Bhor, who shares a similar thought and journey, shedding light on women behind camera. So, we are waiting for our guest to join. Hello, ma'am. Can you hear me? Hello, good evening. Good evening, ma'am. So, so I have set the context today, and we're so happy that you're here with us to speak about women behind camera. And we have a few questions from our partners. And so, let's get started. Yes, thank you so much. Thanks for giving me this opportunity to connect with you and connect with all the persons who are joining the session. Looking forward. Actually, I am a little bit a camera shy person, so I'm not so comfortable with the camera. But it's a really a great opportunity for me to join this platform Canvera.com, which is one of the best brand for the album printing, and not only in India but in Asia too. That's great, and it's really nice to hear that from you, ma'am. And we are honored that you're here with us. So we have two questions for you. Shall we begin? Yes. Yeah. So first question is, how did you get into photography, and how has your journey been as a female photographer? So basically, we'll take first question. How I've been into photography. Uh, Basically, it's fine with Hindi and English, right? Yeah, no problem. So basically, I am from a very small town where in our whole family there's no photographer in our family. My dad was the first lawyer in his village. He was the most educated person in the village actually. Okay. And being from that this family, like very small town, very limited exposure family, और जैसे जैसे बड़े हुए हम लोग तो dad was lawyer, so he wanted to learn something that we can stand on, मतलब हम लोग हमारे खुद के पैर पे खड़े रहे. तो वो उनका ड्रीम था कि हम लोगों को वो उतना एजुकेशन देना चाहते थे. सो उस अकॉर्डिंग उन्होंने हमेशा हमें हमारा एजुकेशन, मतलब हम लोगों ने जो चाहा वो हमें करने का मतलब फ्रीडम दिया. सो बीइंग मतलब बचपन से आर्ट्स पसंद था. तो एक्चुअली बचपन से आर्ट पसंद था, इसी की वजह से आई वेंट फॉर द फाइन आर्ट्स. और ऐसी फैमिली की जहाँ पे आर्ट्स का कोई किसी को कुछ पता नहीं है, और उस एटमॉस्फेयर से फिर आर्ट बैकग्राउंड में आना, इट वाज एक्चुअली चैलेंजिंग फॉर मी. इट्स हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ माय स्कूल टीचर्स तो हमें ड्राइंग सिखाते थे. आज आई कैन से दैट कि आई एम हियर जस्ट बिकॉज ऑफ both of them. Just because of both of them, I am into art field. That's why I am here into this photography section. Because सबसे important reason मेरा photography में आने का ये है कि मैं ऐसी family से हूँ जहाँ पे photography नहीं है. But I met Sachin Bhor into college. We were batchmates. Then Wow, that's nice. We got married. तो तब तक हम लोग दोनों भी फोटोग्राफी से सचिन कनेक्टेड थे, उनका फैमिली कनेक्टेड था. आफ्टर मैरिज माय ब्रदर इन लॉ, उनकी वाइफ्स, सब लोग हमारा पूरा फैमिली बैकग्राउंड फोटोग्राफी है. बट आई वाज नॉट डूइंग फोटोग्राफी. आई वाज 2000
जैसे मैंने कहा कि मेरा फाइन आर्ट्स कंप्लीट हुआ तो आई जॉइंड एड एजेंसी. आई वाज वर्किंग एज अ विजुअलाइजर टिल 2013. Okay. Okay, and actually we shifted here in Pune to start a business photography. Actually, Sachin was handling the wedding section. He started brand unnamed Vivaha Photos in 2011. Then Right. till 2013, I was working as a visualizer. Sachin was doing photography. I was not aware of anything of photography till 2013. Then the business grows very fast within 2 years that he needs my help, family members help in that section. And Right. I'm a basically as I told you, I am fine artist, so I know Photoshop from college days. That we took that benefit. I started Photoshop editing, photos editing, album designing, and I am connected with the Canvera actually from 2013. As I Oh, entered into Vivaha Photos, I was handling all the backend. Actually, I was a backend person, management kind of little bit person who can manage everything very neatly and cleanly and plan for the schedules and all. So from 2013, actually, I was handling albums and everything. So I got connected with Canvera from 2013, and till 2015, I was actually doing everything. Everything was fine. बट हम लोग जो कहते हैं ना कि पैशन होना चाहिए किसी चीज में. आई वॉज वर्किंग, आई correct. वॉज, बट आई वॉज नॉट पैशनेट अबाउट दैट थिंग. और Okay. 2015 तक 16 तक ओके था. 2016 में आई हैड एन एक्सीडेंट. आई वेंट Oh, थ्रू हिस्टेक्टोमी एट द एज ऑफ 31. एंड उसकी वजह से मुझे मतलब वो जो था कि वो एक्सेप्टेंस मुझ में आना बहुत बहुत मुश्किल हो गया था. आई क्विट माय प्रोफेशन. मैं स्टूडियो जाना बंद कर दिया, मैं एडिटिंग करना बंद कर दिया, सब कुछ मैंने बंद कर दिया. आई टुक अ ब्रेक ऑलमोस्ट फॉर 6 months. आई वाज नॉट okay. आई वाज नॉट वर्किंग टिल इन 2016. क्योंकि मेरा एक्चुअली खुद का उस टाइम पे एक्चुअली आई वाज मतलब वो मेरा प्लानिंग था कि आई एम गोइंग टू डू माय मैटरनिटी सेशन, माय न्यूबॉर्न सेशन, माय बेबीज न्यूबॉर्न सेशन. बट suddenly the things like it was like very bad patch. But again we have to overcome. It took me almost Correct. a year to accept that things that thing that I have to live without that organ who defines female actually. That's why. But it took a lot pain. Then मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं तो कुछ तो मेरे लिए सोचा होगा. उसकी वजह से मतलब मैं उस टाइम तक मैं कभी पॉजिटिव जल्दी सोचती नहीं थी. बट ड्यूरिंग दैट टाइम कि मैंने सोचा था कि मेरा न्यूबॉर्न शूट होगा, मेरा मैटरनिटी शूट होगा. सो आई वाज सर्फिंग द पिक्चर्स ड्यूरिंग दैट Right. टाइम माय हिस्टेक्टोमी टिल फर्स्ट 3 months. तो उस टाइम पे आई वाज फैसिनेटेड विद दिस काइंड ऑफ फोटोग्राफी. तो मैंने ये नहीं सोचा था कि आई एम गोइंग टू डू दिस फॉर मी माई सेल्फ. बट मैं मुझे करवाना था. तो समहाउ उसके बाद जो मैंने सोचा कि अभी जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते. तो 1 साल के बाद मैंने फिर प्लान किया कि ठीक है, अगर मैं कुछ नहीं, मेरा खुद का नहीं हो पाया तो लेट्स डू इट फॉर अदर फीमेल्स और अदर बेबीज. उनके लिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो सपना होता है वो अगर हम पूरा नहीं होता है तो हम लोग दूसरे रास्ते से हम लोग पूरा करते हैं. सो मैंने Right. उस टाइम पे फिर वो डिसाइड किया कि ठीक है, लेट इट बी. कुछ तो मेरे लिए अच्छा सोचा होगा भगवान ने कि मैं ये सब चीजें करूं. और Right. then I started studying maternity and newborn photography.
I have decided this thing in 2017 कि मुझे ये करना है. जैसे मैंने कहा कि I have a family background who are everyone is into photography. Actually, my mother-in-law, my father-in-law, my brother-in-law, उनकी wives, everyone is into photography except me. Everyone was doing photography. Even my elder son was taking good pictures than me with the DSLR and digital cameras. So then that time I decided and I started learning. I started वो सब एक्सप्लोर करना मैंने शुरू किया. एंड फिर एक दिन आया कि मैंने फिर सचिन से बात की कि मुझे ये करना है. बट आई वॉज नॉट सो कॉन्फिडेंट बिकॉज मेरे सामने जो एग्जाम्पल था वो थे सचिन. तो सचिन वॉज एक्चुअली ऑलरेडी अ मेंटोर दैट टाइम. And he was actually, his work was fabulous, and I have seen that work only. I have not seen anyone's work, right? So and he has experience that time of almost 15 17 years plus experience in photography, because he was doing photography from I think he was in 10th standard. From that time he was doing wedding photography. So I have the only one example who is the best. And if I want to, and obviously if I am his wife, everyone is going to compare me with him only. That time I thought there's the only way to go to next level quickly is the education, because this was a new genre into India. जब मैंने planning किया, I was not aware that there are photographers in India also who are doing maternity and newborn shoots. Right. That's why I started searching only online, YouTube. I searched a lot. I was following Kelly Brown, I was following Anna Brand, and from their workshops, I have taken a lot of workshops, live workshops I have done, online workshop. Everything was online. There's no in-person workshop during that time. As per my knowledge, actually, there were, but I was not aware because as I said, I was from very small town. I never went outside anywhere outside from India till now. तो उस टाइम पे उतना पता नहीं था. आई वॉज सर्चिंग ओनली ऑनलाइन ऑप्शंस जो आते हैं वो सिर्फ फॉरेन के आते हैं. सो आई स्टार्टेड, बट आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं खुद शूट कर सकती हूँ. आई ज्वाइन सचिन्स 1 month course for the photography, basic photography. I joined that, but I was not because I have already decided that I am going to do only maternity and newborn. I was already I have already pre-planned that I'm not going to do weddings. I'm not going to do anything from these sections. So वो टाइप का एक्सपीरियंस देने के लिए कोई नहीं थे कि जिनके पास मैं जाके वो एक्सपीरियंस ले सकूं. तो ऐसे ही एक दिन हम लोग, my father-in-law was in the hospital actually. That time I saw a workshop at Bangalore for Erin Elizabeth's workshop. That post I saw on, we were actually on the waiting area in the hospital. We were sitting, and I just showed it to Sachin. And as I told you that we are from a middle class family, like, so the fees was too high because we never thought that that kind of fees of workshop. तो उससे पहले हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि इतना फीस हो सकता है कहीं करके. We have actually very limited amount in our accounts due to, because my father-in-law was admitted in the hospital, and that time he supported me that let's do this. Actually we have seen the workshop post 3 weeks before. He said me just call and ask them that we can just book the seat, and we can pay the remaining amount on the day of workshop. If they are allowing us, then let's see, we can manage something till within 3 weeks. We do have time of 3 weeks.
So he supported me, and just because of him I am here today. क्योंकि अगर उस दिन उसने वो सपोर्ट नहीं दिया होता, बिकॉज वी कैन नॉट डिपेंड ऑन विदाउट एनी फाइनेंशियल सपोर्ट, हम लोग कुछ नहीं कर सकते. मतलब वो एक सपोर्ट होता है जो करने का टाइम आता है तब करना बहुत जरूरी होता है. सो that actually after 3 weeks I went to Bangalore. First time I went alone for the workshop. Actually Sachin and we three went for the workshop. Sachin was taking my our son and roaming whole Bangalore, exploring Bangalore, and I was attending the workshop. This was the first time I went alone anywhere. Oh, that's a yes thing, actually yes. मैं कभी उससे पहले मैं कभी अननोन लोगों के सामने, अननोन लोगों के साथ कभी इतना टाइम मैंने कभी स्पेंड नहीं किया था. लाइक आई वाज वेरी we can say a little bit not conserved person, so open person. तो उस टाइम पे हम लोगों ने वो प्लान किया, मैंने वो वर्कशॉप किया, एंड एक्चुअली दैट वर्कशॉप चेंज आवर लाइफ. मतलब वो एक वर्कशॉप है कि जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ. तो जो चीज़ें इवन बिकॉज ये नया सेक्शन था तो ये सब एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल था, एंड वो एक वर्कशॉप की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ. एंड देन आई स्टार्टेड. My first photo shoot was done after I think within 8 days after the workshop. Oh, that's nice. से फिर मैंने yes till that time I remember the date actually. It's 21st November 2018. First individual shoot किया था without Sachin's help. So that's why I started in 2018 और late 2018. एंड फिर उसके बाद अब तक मैं कहीं नहीं रुकी हूँ. एवरी ईयर एवरी मतलब ऑलमोस्ट एवरी टाइम मैं कुछ ना कुछ हम लोग सीखते रहते हैं. बिकॉज इट्स एक्चुअली एंडलेस जर्नी. फोटोग्राफी ऐसा सेक्शन है, फोटोग्राफी नहीं बट एजुकेशन इज सो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मस्ट है कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल जाना है, अगर आपको आपके किसी जॉनर में आपको एक्सपर्ट होना है तो एजुकेशन इज मस्ट. और मेरा ये खुद का ये थॉट है कि जिनके हम लोग वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, जिन मतलब एनी काइंड ऑफ वर्कशॉप, मतलब एनी सेक्शन में हम लोग किसी एक्सपर्ट का अगर कुछ सेशन अटेंड करते हैं तो उनका सेशन, उनका जो एक्सपीरियंस है वो एक्चुअली हमारे एक्सपीरियंस में ऐड हो जाता है, क्योंकि उनका जो खुद का डेवलप किया हुआ ट्रिक्स एंड टेक वो हमारे पास आ जाता है. एंड इन दिस वे आई केम इनटू फोटोग्राफी. एंड आई एम सो सॉरी if I'm not taking too much time. No, that's you're inspiring many out there. Yeah, definitely. Okay. Yes. So इस स्टाइल से फिर एज अ फीमेल फोटोग्राफर मेरा जो जर्नी है वो बीइंग सचिन भोर्स वाइफ, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट जल्दी मिल गया. बिकॉज वी हैव अ सेटल्ड बिजनेस. वी वेर ऑलरेडी इनटू बिजनेस फ्रॉम 2011 इन पुणे इटसेल्फ. तो जिनका वेडिंग्स किया था उनका ऑलरेडी हम लोगों को क्लाइंट बेस रेडी था. तो डेफिनेटली इट हेल्प्स मी अ लॉट टू ग्रो. बट हम लोग ये कह सकते कि एज अ फीमेल फोटोग्राफर मुझे चैलेंजेस सिर्फ इतना लगा न्यू कमर, एज अ न्यू कमर, कि खुद का हमें खुद को बहुत डेवलप करना ज़रूरी होता है. लाइक किसी एक्सपर्टीज वाइज हो या फिर ओवरऑल बिजनेस नॉलेज वाइज, मार्केटिंग. बिकॉज वो थोड़ा सा बीइंग मतलब बैक एंड पर्सन, इन फ्रंट आके बात करना, क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करना, इट वाज एक्चुअली लिटिल बिट मतलब मुझे थोड़ा सा मुश्किल हुआ स्टार्टिंग में बिकॉज ऑफ माय नेचर. बट
being a female photographer in this genre is always a benefit, मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स का जो कंफर्ट जोन होता है वो फीमेल्स के साथ ज्यादा होता है जब हम Right. लोग फैमिली और बेबीज के बारे में बात करें तो. सो फीमेल फोटोग्राफर्स को मतलब मैं ये डेफिनेटली एज कंपेयर टू मेल फोटोग्राफर्स ये जॉनर में ज्यादा एक्सेप्ट जल्दी किया जाता है Yeah. क्लाइंटल. Yes. So it won't bother me a lot. Okay. So, so thank you for these words. Next, we have one more question. I mean, we have a lot of questions actually. So we'll move on to the next question. So, how do you describe your style of photography? Uh, being a fine artist, I always try to create a art piece in my pictures. मतलब वो जब भी किसी के साथ मेरा कम्युनिकेशन होता है, मतलब मैं उनसे डिस्कस करती हूँ उनका चॉइस ऑफ कलर्स, और उसकी वजह से क्या होता है कि उनका क्या थॉट्स है, उनको किस टाइप का स्टाइल पसंद है, वो मुझे जल्दी पता चल जाता है. एंड बीइंग अ फाइन आर्टिस्ट वो एक बेनिफिट डेफिनेटली होता है कि लाइक हम लोग कह सकते हैं कि कलर स्कीम वाइज, लाइक अगर मुझे क्लाइंट ने सिर्फ मुझे बोला कि मुझे ये कलर पसंद है, सो आई कैन इजीली थिंक कि मतलब आई कैन विजुअलाइज कि इसके साथ कौन से ज्यादा ब्लेंड होंगे, और इसके साथ क्या क्या खूब बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा और वो बहुत अच्छा खूबसूरत पिक्चर होगा विदाउट डिस्टर्बिंग बेबी. क्योंकि सेटअप क्रिएट करना या फिर मैटरनिटी पिक्चर्स हो, तो अगर हम लोग कलर स्कीम में हम लोग एस्थेटिक्स का अगर हम लोग सोचे तो कलर स्कीम मेरे ख्याल से एस्थेटिक्स में सबसे टॉप में आता है. लाइक अगर हम लोगों को कलर स्कीम का नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग पीछे जाते हैं. तो बीइंग अ फाइन आर्टिस्ट वो मुझे एक स्टेप ऑलवेज प्लस लगता है कि मेरा जो स्टाइल है वो थोड़ा सा आर्टिस्टिक ज्यादा होता है. आई लाइक टू पुट क्रिएट अ नेचुरल पिक्चर. मतलब हम लोग एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं, प्रॉप यूज करते हैं, बट जितना हम लोग बेबी एज नेचुरल एज हम लोग रखे वो मुझे मेरा ज्यादा प्रेफरेंस होता है. Oh, nice. I think natural is the way to go. So naturally, I think, yeah. The thought behind that is कि ये पिक्चर्स जो हम लोग क्लिक कर रहे हैं, it's not for parents actually, it's for babies. And जब भी हम लोग हमारे खुद की बचपन की बहुत कम पिक्चर्स होती है, राइट, दैट टाइम हम जब छोटे थे तो हमें बहुत अच्छा लगता है वो पिक्चर्स देख के कि हम लोग कैसे दिखते थे, राइट. तो मेरा पर्सनल थॉट ये है कि वो पिक्चर्स देख के वो बेबीज जब बड़े होंगे तो उनको पता चलना चाहिए कि हाउ दे वर लुकिंग एट दैट टाइम. मतलब इतना नेचुरल वो फील कर सके कि वो कैसे दिखते थे. सो माय मेन पर्पस इज लाइक कि जैसे है वैसे अगर वो दिखे तो दैट टाइम आई एम सक्सेसफुल. That's great. That's great. So ये lesson हमारे लिए हमारे सब aspiring photographers, female photographers के लिए भी है कि maternity shoots के लिए try to be as natural as possible. And I really like the concept कि these photos are not for parents but for the babies. So this is an amazing concept, ma'am. So moving on to the next question, where do you find inspiration as a photographer? Okay. इंस्पिरेशन जैसे मैंने कहा कि ड्यूरिंग दैट 2016 तो 6 मंथ की जब मैं बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग ये कह सकते हो कि आई वॉज एक्चुअली नॉट इन द डिप्रेशन बट आई वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट थिंग. तो उस टाइम पे पुणे में ही बिकॉज आई वॉज सर्चिंग फोटोग्राफर्स ना फॉर माई शूट. सो आई थॉट आई वॉज सर्चिंग इन पुणे इटसेल्फ. तो एदिता फोटोग्राफी जो है उनके पिक्चर्स मैंने देखे जब मुझे पता चला कि पुणे में है और उनके पिक्चर्स देखे. दैट टाइम आई रियलाइज कि वो फीमेल फोटोग्राफर मेरे मतलब मुझे पता था कि वन ऑफ द बेस्ट फीमेल फोटोग्राफर हु इज इन पुणे एंड शी इज अ फीमेल फोटोग्राफर. Oh.
तो वो एक्चुअली मेरे लिए ये था कि वो फीमेल फोटोग्राफर है तो मैं बन सकती हूँ, ये थॉट मुझे उनको देख के आया. लाइक दैट टाइम आई थॉट कि इफ शी कैन डू इट, शी इज द फीमेल. That time I thought that even I can do this thing also, this type of photography also. And then I started thinking of starting learning maternity and newborn photography. So basically she is the person who is a good friend of mine now. Oh, nice. That's really nice. Yes. Yeah. So So, yeah. उसके साथ और मुझे जैसे ऑलमोस्ट सभी को पता है कि केली ब्राउन इज द वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर इन द वर्ल्ड. इवन एना ब्रांड इज वर्ल्ड बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर. But I personally like the style of Kelly Brown. It's her style is little bit conceptual and fine art style. तो मुझे Okay. का काम बहुत ज्यादा पसंद आता है. Because you're a fine art person, so you like more of that. Yes, yes. That's great. Okay, so we'll move on to the next question. So, like, I guess you've already actually answered that. What made you decide to become a photographer? So, we are just skipping the question and move on to the next. So, what are the challenges you faced being a woman in this industry? I know आपने बोला कि acceptance मिलता है in maternity industry, but I'm sure आपने कुछ challenges भी face किया होगा, like as a woman in this industry, women photographer in this industry. Yeah. Yes, actually, जैसे मैंने कहा कि मेरा बेनिफिट डेफिनेटली ये है कि सचिन, आई एम अ वाइफ ऑफ सचिन बोर, सो ये ऑलवेज मेरा बेनिफिट है. बट एज अ फीमेल फोटोग्राफर I was new into this photography. यहाँ पे in this type of photography there were there was no large number of photographers in Pune itself. So as a female photographer मुझे ये चैलेंज ज्यादा लगा कि इट वॉज लाइक कि हमें हर चीज को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं. Correct. लाइक तो बेनिफिट फीमेल फोटोग्राफर्स का जब मैंने ग्रुप ज्वाइन किया तो बेनिफिट ये मुझे लगा कि आई एम सॉरी कि डेफिनेटली ये मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है फोटोग्राफी डेफिनेटली. बट आई लर्न दैट कि जो फीमेल फोटोग्राफर्स है ना, they are always ready to help. मतलब if even though you know each other or not, they are always ready to help. You can ask them anything, they help you, they guide you. तो फीमेल फोटोग्राफर्स को सपोर्ट फीमेल्स ही कर रही है. तो वो एक बहुत बेनिफिट मुझे लगा. चैलेंज आई डोंट चैलेंज मेजरली मेरा जो चैलेंज था वो था कि जैसे मैंने कहा कि आई वॉज हैंडलिंग द बैक एंड. आई वॉज बैक एंड पर्सन. आई वॉज नॉट द in front of camera. I was behind the camera person every time. That time it was my challenge to convince parents, to convince their grandparents. मतलब वो जो टाइम है कि ये न्यूबॉर्न फोटोग्राफी को कन्विंस करना, बिकॉज वो बिकॉज वी आर इनटू इंडिया. यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है कि वी कांट, पीपल डोंट टेक आउट बेबीज फॉर द 40 days, बेबीज एंड न्यूली मॉम. तो उस टाइम पे वो एक चैलेंज जरूर था कि उनको कन्विंस करना, उनको उतना कॉन्फिडेंस देना. और दूसरा था कि मैनेजमेंट. यहाँ पे मेरा थोड़ा सा चैलेंज हमेशा कम रहा है इस सब चीज़ों में. लाइक आई ऑलरेडी was connected with Canvera regarding albums and prints. तो वो जो challenges होते हैं फोटोग्राफी जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, लाइक कि कौन सा इक्विपमेंट्स होने चाहिए, कौन से हम लोग प्रिंट्स कहाँ से ले सकते हैं, या फिर फोटोशॉप का एडिटिंग कैसे करते हैं. तो I was actually already do all this now, so it won't bother me to
when I started newly. Sure. So I think benefits बहुत अच्छे हैं और it feels good to know that women हाँ support women. मतलब ये That's a big thing. यस ये चैलेंजेस हमेशा ज्यादा होते हैं कि मेल इंडस्ट्री में हम लोग फीमेल एज अ फीमेल, तो ये सब चैलेंजेस जो चैलेंजेस आते हैं वो ऑलरेडी आई वाज ऑलरेडी हैंडलिंग दोस थिंग, तो मुझे थोड़ा सा कम चैलेंजेस वो लगे एक्चुअली. That's really great to know that. So one more thing we wanted to ask is, what kit do you shoot with, and what would you say are your essentials to have on a shoot? So आपका kit क्या है आपका? What is your, the photography kit? Okay, so basically, I have already told you that I am into maternity, newborn, and child photography. So my gear, I started with Nikon 850, and right now I have the Z6 and Z7 II also. But every time my go-to lens is 24-70 2.8. Okay. माई फेवरेट लेंस, बिकॉज हम लोग उसमें ये चैलेंज नहीं, मतलब ये हम लोग लेंस चेंज करने का टाइम नहीं रहता है चाइल्ड एंड न्यू बॉर्न, क्योंकि वो एक हम लोग फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सब कुछ चेंज होने का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है इन दिस सेक्शन. सो हम लोग क्लोज शॉट्स के लिए हम लोग लेंस चेंज करना इट्स नॉट एक्चुअली अ स्मार्ट डिसीजन, आई थिंक सो. तो मेरा जो गो टू लेंस, मेरा फेवरेट लेंस है, आई थिंक मैंने 99.9% शूट्स उसी के साथ किए हैं, ओनली 24-70 2.8. For the micro shots I use 105 micro lens, and for maternity sometimes I use 50 mm also. तो ये मेरा सबसे बेस्ट गो टू किट है. आई थिंक कि कैमरा और वो सब चीज़ें उतना मतलब जितना इम्पोर्टेंस उस चीज़ को दिया जाता है उतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, क्योंकि बिकॉज न्यूबॉर्न फोटोग्राफी, चाइल्ड फोटोग्राफी, मैटरनिटी फोटोग्राफी, दीज आर द सेक्शंस की यू नीड टू वर्क आउट ऑन द होल पार्ट, not only Right. the and gear. You need to Correct. have backgrounds, you need to have knowledge of color scheme, color aesthetics are so important. Lighting is so important कि अगर आपको वो ये सब चीजें आपको पता है, it is actually a bunch. It's not only about only to click, because if I arrange everything, if I pose model, pose mom to be, if I pose baby, if I wrap baby hair, if I create a setup, and if I tell my son to click, just click, he can take that same pictures. Correct. So it's not only the clicking the shutter button. Definitely. Because Totally agree with you in this. ये जब हम लोग फोटोग्राफी को सोचते हैं ना, तो फोटोग्राफी इज एन आर्ट, ये सेंटेंस ऑटोमेटिकली फर्स्ट आ जाता है. सो वेयर देयर इज अ आर्ट, यू मस्ट नो द ऑल द एस्थेटिक्स ऑफ आर्ट, एंड देन यू कैन गो टू द टेक्निकल पार्ट. डेफिनेटली कैमरा मैटर करता है, बट अगेन if you have a good camera but if you don't have a knowledge of color scheme, if you don't have knowledge of lighting, if you don't have knowledge of how to create a setup, how to pose baby, how to take best angles for the shots, even though in this section the angles also matters a lot, because maternity has their own posing and lighting and angles, and newborn has the different challenge, and the baby has the different challenge also. Actually, Definitely. You lose a moment, then it's gone, right? Yes. Okay, then. So we'll move on to the next question. So what would be your advice for aspiring women photographers? Basically, those who wanted to do newborn photography, especially newborn photography, without learning, don't ever try to start
न्यूबॉर्न फोटोग्राफी एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर. अगर आपको आपको पता है कि यू वांटेड टू डू दिस, यू आर पैशनेट अबाउट न्यूबॉर्न फोटोग्राफी, go and learn first, because baby safety is the always a priority in newborn sections. Right. Pictures नहीं मिले, shoot complete नहीं हुआ, don't worry. But if baby gets hurt, क्योंकि उनका रैपिंग का स्टाइलिंग अलग होता है, मतलब कैसे without hurting them, how you can swaddle them, how you can pose them, it's so important in the when it comes to newborns actually. And any type of photography, अगर if you are a female, आई नो कि अभी ऐसा बहुत कम हो गया है, मतलब इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री राइट नाउ. फोटोग्राफी में वेडिंग्स में बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, इवन डेफिनेटली फैमिली मैटरनिटी न्यूबॉर्न्स में डेफिनेटली नंबर ऑफ फीमेल फोटोग्राफर्स ज़्यादा है. बट एज अ एनी फीमेल फोटोग्राफर अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो वो सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि लर्न एंड देन स्टार्ट. एज अ फीमेल आई नो कि हमें पता होता है कि कौन से चीज में कितना परफेक्शन लाने के लिए क्या क्या करना है. लाइक वी हैंडल आवर होल हाउस, तो हमें पता होता है कि हाउ टू मैनेज एवरीथिंग. नो, बेनिफिट, टेक दैट बेनिफिट. एंड ऐसा नहीं है कि मेल फोटोग्राफर से आप सीख नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है. लाइक ये थॉट भी आता है कि व्हाई आई गो टू मेल फोटोग्राफर, एंड ऐसा कुछ नहीं है. यू गो एंड लर्न फ्रॉम द बेस्ट पर्सन. डोंट थिंक दैट ही इज मेल और फीमेल, और ऐसा कुछ नहीं होता है. लाइक nowadays I don't think कि there's a big challenge as a female photographer. When if we are talking 10 years back, we were talking about 10 years back, definitely that time was really challenging. But nowadays, like there's a lot of internet sources available. Even male photographers have acceptance of female photographers as a team member. तो yes, actually, तो आई डोंट थिंक कि हम लोगों ने, अगर हम लोग खुद डिफरेंशिएट करना बंद कर दे तो सामने वाला डिफरेंशिएट नहीं करेगा. लाइक हमें पता है कि नेचर का रूल है कि व्हाट वी गिव वी गेट इट इन रिटर्न. करेक्ट. यूज दिस रूल ओनली कि हम लोग एज अ फीमेल अगर डेफिनेटली प्लस पॉइंट होते हैं, बट दोनों साइड में प्लस होते हैं. हम लोग बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग किसी चीज में एक लेवल पे अच्छे हैं, वो लोग किसी चीज में, तो वो मेरे ख्याल से ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग साथ मिलके काम करें. बिकॉज आई डू हैव अ असिस्टेंट हु ऑल आर मेल. ओह, ओके, दैट्स ग्रेट. ऐसा कुछ है कि इवन आई डू टेक हेल्प ऑफ पेरेंट्स, फ्रॉम पेरेंट्स आई डू टेक हेल्प ऑफ डैड. ऐसा कुछ नहीं है कि वो कर नहीं सकते, बट जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ आवर थिंकिंग कि हम लोग खुद ही ये सोचे कि वी आर फीमेल फोटोग्राफर, वी हैव टू बी विथ ऑल फीमेल फोटोग्राफर्स ओनली, वी कांट वर्क विथ मेल फोटोग्राफर्स. देयर आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होना चाहिए, बिकॉज वी आर सेपरेटिंग आउट फ्रॉम द वर्ल्ड एक्चुअली. मतलब हम लोग खुद वो कर रहे हैं कि हम लोग खुद को उनसे एक स्टेप ऊपर लेके, आई थिंक सो कि हम लोग एक स्टेप ऊपर नहीं लेके जा रहे हैं. वी आर कंपेयरिंग आवरसेल्व्स ओनली. That's true. Totally agree. Okay, so we'll move on to the next question. Okay, so what is the best advice you have ever gotten? Like आपने अभी एक advice दिया है सारे women photographers के लिए, but आपको कौन सी advice मिली जो आपको लगता है कि it's the best advice? मेरे ख्याल से बेस्ट एडवाइस मुझे ये मिला है कि अगर किसी क्लाइंट का, इफ यू गेट अ बैड रिव्यू फ्रॉम अ क्लाइंट, टेक इट पॉजिटिवली एंड लर्न फ्रॉम इट, इम्प्रूव फ्रॉम इट. मतलब ऐसा होता है बहुत बार कि वी गेट वेरी बैड एक्सपीरियंसेस विथ क्लाइंट्स. दैट टाइम वी थॉट वी आर द बेस्ट, एंड
everything is good, and why he or she is complaining that he don't like or she don't like. But always think that there must be something we have missed, and that's why they are asking for that for us. Correct. वो एक हमेशा मतलब अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आपको वो क्या कंप्लेन किया है, वो क्या है, वो बैड रिव्यू क्यों है, वो एक्सप्लोर कीजिए, वो समझिए और उस पर इम्प्रूवमेंट कीजिए. यू विल ऑलवेज गो टू वन स्टेप फर्दर. Agree. नहीं And I think ये बिजनेस में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हम लोग पर्सनली बिजनेस में पर्सनली चीजें कम लेनी चाहिए. that's true. I think this is for all the businesses, not only photography. So learn from the reviews, learn from everything. That is true. Don't take it personally, actually. Correct. And don't take it personally. Improve, not get, don't be demotivated basically. Yeah. Just keep going. That is, I think, the takeaway is here. Okay, Because ma'am. So we are talking, yeah, so ma'am, so we are almost towards the end of the session, but I just wanted one thing from you, like about Canvera. How was your experience with Canvera? This is something we all want to know, actually. basically, as I told you, I was actually connected with Canvera from 2013, and सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मुझे लगता है किसी भी बिजनेस में, if you are into creative section, you don't want to look at that कि एल्बम प्रिंट को गया है क्या, एल्बम का क्या स्टेटस. You don't need to call personally, you don't need to ask someone that when will be my album coming, when it get ready, when will be shipped. तो ये मुझे हमेशा ये बेनिफिट लगता है कैनवेरा के साथ कि you just need to put album, make payment, and you will get all the updates automatically. तो ये आपका बैक माइंड आपका जो रिलैक्स होता है, it is हम लोग fuel to get more creative. Exactly. पर्सनल रीजन है कि ये सबसे बेस्ट चीज मैंने आज तक किसी भी मैंने बहुत सारे एल्बम कंपनीज के साथ काम किया है. लाइक आई वाज हैंडलिंग बैक एंड ऑफ विवाह फोटोज फॉर द एल्बम एडिटिंग एंड एल्बम प्रिंटिंग एवरीथिंग. तो वो बेनिफिट मुझे हमेशा कैनवेरा के साथ ज़्यादा सपोर्ट मिला है मुझे कैनवेरा से. और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रिंटिंग में जो कंसिस्टेंसी होना चाहिए क्वालिटी वाइज, तो वो मेरे ख्याल से मुझे तो अभी भी मैं कैनवेरा के साथ ही हूँ, तो वो एक है कि कैनवेरा के प्रिंटिंग का जो कंसिस्टेंसी है, मतलब इफ यू रीप्रिंट द एल्बम देयर वोंट बी एनी चेंजेस इन दोज एल्बम. वो एक है कि जो कलर्स आपने भेजे हैं वही कलर्स प्रिंट होके आएंगे. ऐसा नहीं है कि मतलब ये इसमें चेंज हो गया, वो उसमें चेंज हो गया. तो वो एक सबसे बीइंग आर्टिस्ट वो थोड़ा सा कलर्स ज़्यादा पता होता है, तो वो है कि कलर्स मुझे बेस्ट मिलते हैं कैनवेरा के साथ. ऐसा कभी नहीं होता है कि आज ये मतलब ये एल्बम को प्रॉब्लम है, मतलब बैक टू बैक एल्बम्स कि इसमें ये प्रॉब्लम है उसमें वो प्रॉब्लम है कलर्स वाइज, ऐसा कभी नहीं हुआ है. बैंडिंग वाइज नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं. मतलब इट वाज एक्चुअली हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक परफेक्ट पैकेज है कि आप जस्ट सेंड करो एल्बम, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है. एंड यू इवन वो जो टाइम मुझे मिलता था उस टाइम पे, इवन राइट नाउ फॉर द किड्स आई हैव every print and every album I'm printing from Canvera only. That's really nice. Canvera album only. That's amazing. That's really great to know. And so related to Canvera login, all those things, everyone can DM us and we will be happy to reply you and assist you. And so we also have a good news for everyone. We are launching a Mesmera photo book on 31st of this month. And we are giving 25% off on pre-orders, but this is valid till 31st May.
So I think, ma'am, you have seen the Mesmera photo book as well. So we would request everyone go to our landing page, check our Mesmera photo book, and it's our biggest mega launch that you're doing, and we're giving 25% off. So everyone can check out on our website. So thank you, ma'am, for joining us. Anything you want to add here? आप कुछ add करना है, ma'am? Thank you so much. Thank you, Canvera. Thank you, Mahashweta. You have given me this opportunity to share my journey. Thank you, all. Thank you so much. Thank you everyone for joining in. Have a great weekend ahead. Bye bye. Take care.